आईसी 2016 में पूछा गया था क्लास 12 में। Function, there is a class constant which is having word and the length of the word as the member data. ठीक, सो हमने क्या किया, क्लास डिफाइन की, वर्ड और लेंथ को हमने डिफाइन कर दिया, मेंबर डेटा डिफाइन हो गया। Then there was a function which is having the same name as the class name, that is constructor. It is saying to initialize those. String is initialized with double quotes, length is initialized with 0. Then there is a function read word. Enter the word in lower case. Question is saying enter the word in lower case. Word input करना है तो हमने next line नहीं लगाया, next. Fine. Dot to lower case. In case the user will input something in upper case, then also it will convert it into lower. Then the next function is saying shift all consonant to the beginning and vowels at the end. हम सेंटेंस से वर्ड से एक्सट्रैक्ट करेंगे कैरेक्टर, चेक करेंगे कॉन्सोनेंट है या नहीं, और अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उसको बिगिनिंग पे लगा देंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में, वोवेल से तो राइट हैंड साइड में। ठीक, क्या करा, यहां से समझना है, इंडेक्स नंबर का लूप लगाया। सपोज द वर्ड इज spoon in lower case, spoon in lower case, extracted the character, the first character index number 0 is s. S will satisfy its condition, it is not a and not e, not o, not I, not u, है ना, it is not equal to any one of this. So R में ऐड हुआ, R में क्या है, S. लूप चला, I is 1, the character at 1 is P. P is not A, not E, not O, है ना, not A, and all the conditions are false. All the conditions are true, sorry, all the conditions are true. And लगा, सारी condition true होनी चाहिए। जाके S से पहले नेक्स्ट कैरेक्टर इज आई, आगे बढ़ा, आई नेक्स्ट कैरेक्टर इज ओ. O is not equal to A true, not equal to E is true, not equal to O is false. कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गई, L से पहुंच गए, R में जुड़ा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ऑलराइट, नेक्स्ट कैरेक्टर इज एक्सट्रैक्टेड, next character is at index number 1 2 3 is O, again the same condition, this one is false, L से पहुंचे, fine, and it will go ahead and extract N. N is not equal to A true and N is not equal to A E true, so ये true हो गई, पूरी सारी से satisfied है, R के पहले N जुड़ा। After end of the loop, it will display this string R, where all these consonants are at the beginning of the string and all the vowels are at the end of the string. Alright? Now the most common mistake. Most common mistake, let's discuss this. This is the condition for checking vowel. This is the condition for checking vowel that we often use. When the question comes to check consonant, most of the time children do this. They make it not equal to. Okay? And then they say now this condition becomes check consonant. ये बहुत कॉमन आंसर मिलता है जो कि गलत है। क्यों? अब आप देखिए, कोई भी कॉन्सोनेंट ले लीजिए, ये वोवेल कॉन्सोनेंट ले लिया S
s is not equal to a, true, सही है। Now take I is not equal to a, false, I is not equal to e, false, I is not equal to o, false, I is not equal to I, true। क्या हुआ, अंदर चला गया ना, वॉवल होने पे भी अंदर चला गया, कोई एक भी ट्रू हो गई तो अंदर चला गया, इसका मतलब सारी ट्रू होने पे होना चाहिए था ना, इसलिए हमने यहाँ पे एंड लगाया था, तो यहाँ पे भी एंड लगना है, अभी तो लगाया था, एक कॉमन मिस्टेक हम समझे, नॉट इक्वल टू भी लगाना और एंड लगाना और भी बदलना है कि वो लॉजिकल ऑपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, दूसरा तरीका क्या है और आसान, लिखते हैं AEIOU डॉट इंडेक्स ऑफ CH इक्वल टू -1। इंडेक्स ऑफ फंक्शन, हाउ डज इट वर्क? It will check the character. It will check the character in the given string and it does the first occurrence of the given character. Now this character is not occurring. If the character is not present, what it will give you? -1. Okay. So if this character is not present, it gives you -1. Now take the example of I, vowel. So I is present here, it will give you 2. Index number 0, 1, 2. Yes, sir. This I is present at index number 2, so it will give you 2. 2 is not equal to -1. False. Vowel है तो इधर जुड़ेगा। In case you take P, a consonant, P is there? No, sir। No. What it will give you? -1। -1 is equal to -1? True। True. So it is coming true when this character is not present in the list of vowels. So if it is not in the list of vowels, it may be any character, but here we consider all the characters are letter. If the all characters CH is a letter that is previously considered or checked, we can say this is not a vowel, which means it is a consonant. Fine? Yes, sir। How to add before, how to add right, just change the order. Just to add before, CH is to be written before R. To add after, CH is to be written after R. Fine? The next part of the question is saying change word. Next function in this question is change word. Change word is saying change the cases of all occurring constant of the shifted word to uppercase. Alright, so we need to add a statement in the function, shift cons function, just do the change, word equal to R. Okay, this statement you need to add in the function shift cons. After displaying or before displaying, you just change this, because changes is to be reflected. स्पून का हमारा क्या हो गया था? ये हो गया था। तो हम क्या करेंगे? इस चेंज वर्ड में प्रोसेस करना है। तो वर्ड चेंज हुआ है, ये इंश्योर करने के लिए हमने शिफ्ट कॉन्स फंक्शन को यहां कॉल कर लिया। शिफ्ट कॉन्स फंक्शन को यहां पे कॉल कर लिया, जैसे कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। नाउ एक्सट्रैक्ट ईच वोवेल, extract each character, and if it is a consonant, change it into uppercase. So same logic is to be applied. एक दूसरे स्टिक ले रहे हैं, एक एक करके कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे।
जो भी वर्ड है उसकी लेंथ का ग्रुप चलाया, ठीक है। कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, char at I from which string, word dot char at I will extract characters. Pardon? हाँ, it is continuous. It will extract a character. Now this character is a consonant. Same way, if this character is consonant, this character is not in this list, it will give you -1. It means it is a consonant. We have to convert it into uppercase. So if the character is in lowercase, suppose small b, the sky code is 98. I want capital B, the sky code is 66. The difference is, how much is the difference? 32. So we have to subtract 32 from the sky code. So the statement will be ch equal to character of ch minus 32. In one statement, you can say ch minus 32. Ch is the character type of value. If you subtract something from the character type of variable, it will subtract it from the sky code. Always. Whenever you will subtract anything from the character variable, it will subtract from the sky code. Whatever the result will come, that is an integer value. Character and integer processed, result is integer. That integer sky code is converted into character. So as you are subtracting 32, it will be uppercase of that. Uppercase of the characters, and we will add this into res. Res equal to res plus ch, or let's close this curly bracket and write res equal to res plus ch. Fine. Character is extracted if it is a consonant, it has become uppercase consonant and added into res. Character is extracted if it is not a vowel, not a consonant, it is a vowel. When this process is skipped, that character is added as it is. Okay? Now display word equal to res. The original word is updated. Okay? There is a display function which is saying to display original string. System.out.println, you can give the message. Original string is word. Then if I call change word, चेंज वर्ड फंक्शन मैंने डिस्प्ले कर दिया था, है ना, तो वो शिफ्टेड स्ट्रिंग शिफ्ट वाली डिस्प्ले हो जाएगी वहां पे, और शिफ्ट वाली डिस्प्ले हो गई। चेंज वर्ड फंक्शन कॉल किया, इसके बाद हम चेंज स्ट्रिंग दिखा रहे हैं, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वर्ड में। वर्ड में हमने चेंजेस रिफ्लेक्ट क्यों करा है? क्योंकि चेंजेस की आरईएस में, आरईएस जो है वो लोकल वेरिएबल है, वो यहां पर डिस्प्ले नहीं कर सकते, दूसरे फंक्शन में यूज नहीं हो सकता। मेन में जो बनाएंगे क्लास नेम इज const change object alright,
Then input function is to be called, that is read word. And display function. Okay, so it will display these changes, and in the meanwhile this change word and set cons functions are already called. So this function change word and set cons I am not calling from here main, because display is calling shift word and shift word is calling shift cons. तो वो प्रोसेस ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा है, दोबारा कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है. फाइन.